the three topics which we have studied yesterday, that is still present on blackboard. The fourth topic, before to start this topic, there was power failure. Once again, I should discuss that fourth point, in which what we have studied about cytokine barrier. What I have told you, that this barrier is especially used for virus infected cells. Clear? इसको दिमाग में रखना है कि साइटोकाइन बैरियर का अगर नाम आता है तो it will be used only for virus infected cell. What is done in this process is the cells which are already infected by any virus, that cells start to secrete a special protein which is called as interferon. ठीक है, वो सेल्स एक स्पेशल प्रोटीन बनाने लगते हैं जिनको हमने इंटरफेरॉन नाम दिया, और ये इंटरफेरॉन नेबरिंग सेल्स को, यानी उसके अलावा जो उसके आसपास के सेल्स हैं उनके ऊपर एक कवर जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, और वो जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको ये पर्टिकुलर वायरस जो है ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? साइटोकाइन बैरियर. ओके, सम कंसेप्ट इज for clarification of this topic, not this topic, for a quick revision of innate immunity, I am going to show you some slides of innate immunity heading. Wait for 1 second. Let me remove some students, those whose video is not coming. Of the fault, such as the response is in too soon. Okay, what we will start from here is innate immunity. In between that clipping, if anybody is having any doubt, you may raise your hand, I will answer it immediately. Okay, it is just for a quick revision. Just see. Transmitted by vector mosquitoes. However, with careful control measures, vaccination and drugs, these diseases can be dealt with. You may have noted that some people get sick more often than others. When an infectious disease is doing the rounds of your locality, there are some who remain healthy while others take ill too soon. Also, even though our body is attacked every day by several infectious agents, we do not succumb to every agent. Why is that? The answer lies in the immunity of our bodies, which varies from individual to individual. Immunity is the overall ability of a host to fight. ये वही है कल जो बताया था डाबर च्यवनप्राश का प्रचार. नहीं, डाबर का नहीं बताया था कल, तो उसको बताया था. कौन था? पतंजलि का च्यवनप्राश. जो खा रहा है उसमें टकरा के वापस चला जा रहा है. समझिए आकांक्षा? Yes, sir. खाते रहो च्यवनप्राश. Fight the disease-causing organisms. Immunity is of two types, innate and acquired. Innate immunity is something we all possess since birth. It is a non-specific kind of defense. We have already discussed the meaning of word non-specific, है ना? Which provides different types of barriers to the entry of foreign agents to our body. 4 different types of barriers are provided by innate immunity: physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, and cytokine barriers. The skin on our body is the main physical barrier to the entry of microbes.
The mucous coatings of the epithelial lining of the respiratory, gastrointestinal, and urogenital tracts inside the body are also physical barriers to microbes as they trap them. Saliva in the mouth, hydrochloric acid inside the stomach, as well as tears in the eyes, act as physiological barriers to microbial invasion. Our body also has certain types of leukocytes or white blood Cellular barriers include different types of leukocytes. Here you can see some structure of common leukocytes. cells or WBCs, such as monocytes, natural killer lymphocytes, and polymorphonuclear leukocytes, also known as PMNL neutrophils, in the blood. Together, they constitute a cellular barrier along with macrophages in the tissues. See, this is the structure of macrophages. How macrophages, what we have studied yesterday, that macrophages engulf the foreign particle by the process of phagocytosis. दो words हमने पढ़ा है, phagocytosis and another is pinocytosis. If a cell is engulfing any solid object, it is called as phagocytosis. And if a cell is engulfing liquid object, liquid thing, it is called as pinocytosis. In the simple word, it is called as cell eating and cell drinking. Cell eating मतलब phagocytosis, cell drinking मतलब pinocytosis. See. They can also destroy microbes. Some virus-infected cells release proteins called interferons that prevent the spread of infection in the body, thereby acting as cytokine barriers in the body. On the other hand, acquired immunity is pathogen-specific. It depends on the body's memory. Listen very carefully. Acquired immunity is pathogen-specific. This thing we have studied, discussed yesterday. उसके आगे एक वर्ड क्या बोला? It depends on memory. तो यहाँ पर जो मेमोरी है, ये ब्रेन वाली मेमोरी से इसका रिलेशन नहीं है. ये किस मेमोरी की बात हो रही है? सेल्स की मेमोरी. सेल्स की मतलब WBC में कुछ अलग तरीके के सेल्स बनते हैं, which are called as memory cells. These memory cells helps us in protecting against various diseases. जैसे ऐसा सुना होगा कि जो सपेरे हैं या जो मधुमक्खियों का शहद निकालते हैं, जो सपेरे हैं उनको सांप काटने का असर नहीं होता है. क्यों नहीं असर हो रहा है? हमें सांप काट देगा तो काम खत्म हो जाएगा. वो they are also human being. Why it is not affecting their body? What is happening in their body? तो what is the process? कि जब पहली बार उसको किसी सांप ने काटा तो the poison has been injected by the snake, which is called as venom. When that venom is entering into the body of that particular person, that venom is producing some antibody. Already we have studied that if antigen will enter in our body, antibodies will be produced. तो जैसे ही वो वेनम गया, वो वेनम हमारे बॉडी में जाके कुछ एंटीबॉडी बनाएगा. दैट एंटीबॉडी विल रिमेन इन आवर बॉडी सेल्स एज मेमोरी सेल्स. वो एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स के फॉर्म में या मेमोरी सेल्स के हेल्प से हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. समझ में आ रहा है? दोबारा जैसे ही सांप ने काटा, पहली बार उसने ज्यादा असर किया क्योंकि हमारे अंदर मेमोरी सेल्स नहीं थे उस वेनम के अगेंस्ट. पहली बार में काटने की वजह से हमारे अंदर मेमोरी डेवलप हो गई. अब अगर दोबारा उसका अटैक होता है तो यही जो मेमोरी हमारे अंदर है, ये उससे हमें क्या कर लेगी? बचा लेगी. समझ में आ रहा है? दिस इज द रोल ऑफ मेमोरी सेल्स. ऐसे ही अभी इसको वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. अभी मैंने एक सिर्फ आउटलाइन कांसेप्ट बताया कि मेमोरी सेल्स कैसे काम करता है. नाउ सी. Thereby acting as cytokine barriers in the body. On the other hand, acquired immunity is pathogen-specific. It depends on the body's memory. For example, when a body encounters a bacterium for the first time, it produces a low-intensity response called a primary immune response. प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. अभी आगे इन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, डोंट वरी. जैसे ही कोई पैथोजन पहली बार हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, हमारे बॉडी का उसके लिए जो रेस्पॉन्स होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. And produces memory cells. This primary immune response is producing what?
memory cells. Clear? However, when the same bacterium attacks again, the memory cells help to elicit a secondary immune response of high intensity. This response is also known as an anamnestic response. Both primary and secondary immune responses are made possible by two special lymphocytes in our blood: B lymphocytes and T lymphocytes. Okay. Now see on blackboard. अभी तुम्हारे स्क्रीन पे मेरे ख्याल से ब्लैक बोर्ड छोटा दिख रहा होगा ना? Okay, I am stopping the stop sharing option for some time. Now see, what is, yes Shubham, you want to say something? कहाँ गया? Yes, Shubham, unmute your mic. कुछ नहीं सर, Okay, ऑप्शन था बड़ा करने का व्हाइट ठीक है. बोर्ड। Now see, जो अभी हमने पढ़ा उसको एक बार और. क्या जाना हमने कि if any pathogen is entering in body for first time. फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में पहली बार एंट्री करेगा तो दैट पैथोजन विल प्रोड्यूस व्हाट? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. क्लियर? और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हमेशा क्या होता है? इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी. लो इंटेंसिटी मींस this will not be able to protect our body from that particular pathogen. ये हमारे बॉडी को बचा नहीं पाता है. क्लियर है? But what is the advantage Yes, of this? This, when this pathogen is entering into our body, it has already produced what? Primary immune response. This primary immune response get stored in our body in the form of memory cells, not in the form of memory cells, by the help of memory cells. The primary immune response is stored by the help of memory cells. Clear? Now what will happen if this same pathogen, suppose this pathogen is A plus, if this A plus pathogen is again entering in our body, means second time infection. If that particular pathogen is again entering in our body, what will happen in our body? The already produced primary immune, not primary immune response, we can say that the already produced memory cells. Memory cells will immediately start, memory cells comes into action. ये तुरंत अपना काम शुरू करेंगे. मेमोरी सेल्स तुरंत अपना काम शुरू करेंगे. नाउ दे विल सेंड मैसेज टू lymphocytes, not only to lymphocytes, सिर्फ lymphocytes को नहीं, they will send message to all that cells of our body which will help in killing of this particular antigen. समझ में आ रहा है? तो इनमें जो मेजर रेस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? जो कल हमने पढ़ा था, lymphocytes are of two types. We have studied B and T. The lymphocytes which we are getting matured in bone marrow were called as B, and which were getting matured by the help of thymus gland were called as T. So what will happen? These lymphocytes will start to produce. Lymphocyte का जो मेजर काम है, अभी हम इसके वर्क पे भी आएंगे धीरे धीरे, but the major work of lymphocyte is to produce what? Antibody.
जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनता है ये बेसिकली किसकी वजह से बनेगा, लिम्फोसाइट की। एक जो है इसमें लिम्फोसाइट बनाएगा, दूसरा लिम्फोसाइट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि दिस लिम्फोसाइट्स, द मेजर रोल ऑफ लिम्फोसाइट इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यहाँ हमने क्या लिखा कि जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी सेल्स विल कम इनटू एक्शन एंड इट विल एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स टू किल दैट एंटीजन। तो इस लिम्फोसाइट को कैसे एक्टिवेट करेगा, इस लिम्फोसाइट को अब इमीडिएटली मैसेज मिलेगा क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, ताकि हम इस एंटीजन से या इस पैथोजन से बच सके। समझ आ रहा है वर्तिका? पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में हम बीमार क्यों हो गए, क्योंकि हमारे अंदर ये बना ही नहीं था। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे अंदर किसी भी डिजीज का जब पहली बार कोई बीमारी हमारे अंदर होती है तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में ज्यादा होता है। इफ सेम डिजीज इज रिपीटिंग मेनी टाइम्स मीन्स इफ we are getting infected by the same pathogen once or twice in a year on a regular basis, but we will feel that there is no major effect of that pathogen in our body. समझ में आ रहा है? देखा होगा जैसे घरों में जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बीमार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हफ्ते में एक आध दिन बीमार रहते ही रहते हैं। लेकिन जो कम बीमार होते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। होता है ऐसा? जनरली जो मेल मेंबर्स हैं उनके साथ ऐसा होता है कि अगर उन्हें थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो तुरंत बेड मतलब अब उनका चलना फिरना, क्यों ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि वो पैथोजन पहली बार उनके अंदर एंटर किया और उनके अंदर मेमोरी सेल्स जैसी कोई चीज बनी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे उसका असर ज्यादा हो रहा है। जो डेली बीमार पड़ रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे मेमोरी सेल्स बने हैं, वो कुछ न कुछ उनको बचा लेते हैं। इसलिए प्रकृति ज्यादा बीमार पड़ने में भी फायदा है, मेमोरी सेल्स ठीक ठाक रहेंगे। बट इट इज नॉट अ गुड हैबिट। हमें बचना चाहिए क्या, बार बार बीमार पड़ने से। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि जितना हम बीमार पड़ेंगे इतने हमारे ये जो सेल्स है इनका वर्कलोड बढ़ता जाएगा। जितना इनका वर्कलोड बढ़ेगा तो ऑलरेडी भी ये इतना हमारा कंसेप्ट काम करना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज पे वर्कलोड बढ़ा देंगे तो व्हाट विल हैपन, उसकी जो वर्किंग इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठीक ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम में भी होगा कि इफ वी विल इंक्रीज द वर्कलोड तो ऑटोमेटिकली द वर्किंग इफिशियंसी विल डिक्रीज। ओके, तो अभी जो कंसेप्ट था वी हैव डिस्कस्ड दैट कंसेप्ट, नाउ सी वंस अगेन। respectively. B lymphocytes produce proteins to fight pathogens, whereas T lymphocytes help B cells to perform this task. See what it is available on your screen that B lymphocytes are producing proteins which are helping in fighting antigen pathogens. और क्या यहाँ दिखाया कि टी लिम्फोसाइट इनको हेल्प कर रहा है। तो यही जो वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको ये बोल रहा है प्रोटीन, अभी आगे हम जानेंगे दीज आर प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। यही जो वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अपने बुक का पेज नंबर 151 देखिए। The same structure is available on your book and what is written, the structure of antibody molecule. Clear? दिख रहा है ब्यूटी? पेज नंबर 151। It is structure of what? Antibody. Clear? So B lymphocytes are helping in production of what? Some particular proteins which are called as antibodies, and T lymphocytes are helping B lymphocytes in producing this antibody. The protective proteins produced by B cells are called antibodies. Each antibody molecule has 4 peptides. See the structure in NCERT? The same thing is going on. I am not going to repeat it again. It is a Y-shaped structure. अपने स्क्रीन पे देखिए, it is a Y-shaped structure. यहाँ पर कुछ अलग से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके दोनों एंड पे। यही वो प्लेस है, दिस इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर दिस एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन। यहीं पर एंटीजन जुड़ जाएगा
और जो व्हाइट कलर से दिख रहे हैं ये सल्फर के मॉलिक्यूल्स है, यानी एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से सल्फर के बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर? और इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसपे अभी मैं ये कर्सर मूव करा रहा हूं, इट इज अ लॉन्ग चेन। ये पहली और दूसरी ये दोनों लॉन्ग चेन है और ये किनारे दोनों तरफ शॉर्ट चेन है, तो इसको बोलते हैं हैवी चेन। जो लॉन्ग चेन है इट इज कॉल्ड एज हैवी चेन एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइट चेन। Chains. Two small and two longer ones. The two small chains are called light chains, while the two longer ones are called heavy chains. Therefore, an antibody is represented by H2L2. H2L2, is it clear, Beauty? Unmute your mic. Yes, sir. Akriti, unmute your mic. यस सर। समझ में आ रहा है अब तक? H2L2 नहीं सर। हाँ, तो हाथ तो उठाओ। दो हाथ उठा के पूछोगे नहीं तो मैं कितने लोगों का माइक बार बार अनम्यूट कराता रहूंगा। See, once again I am stopping this option. The same diagram is available in your book also. Y-shaped structure, two Y-shaped structure, not two Y-shaped, one Y-shaped structure. One structure is like this, and one more stand is present like this. These structures, this is called as H1. This is called as H2. ये दोनों चेन लॉन्ग्स हैं तो दे आर कॉल्ड एज H1 H2. This is called as L1. This is called as L2. Both these chains are joined together by the help of sulfur bonds at several places. Clear? तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है it is also called as H2L2. Why? Because that chain is having two heavy chains and two light chains, means two long chains and two small chains. That's why it is also called as H2L2. And at this location antigen binding sites are present. Means what is the role of antibody? Antibody binds with antigen. Here clearly we can see that one antibody can bind with more than one antigen. एक एंटीबॉडी एक से ज्यादा एंटीजन से जुड़ सकती है। क्लियर इतना? प्रीति पेन बाद में खाना। क्लियर इतना? Any doubt? Akriti? No sir। Okay. See. IgA, IgM, IgE, and IgG are some examples of antibodies in our body. Yes, वर्तिका कहाँ गई? हैंड रेज करके। वर्तिका, raise your hand once again. Yes, unmute your mic. ये H2L2 पूरे एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि साइड को बोलेंगे H2L2? H2L2 जो ये जो पूरा Y शेप्ड स्ट्रक्चर है इसी को H2L2 बोलते हैं। ठीक है? अभी जो अभी एक दो सेकंड पहले जो बताया डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बताया, ध्यान से सुन लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। Heavy chains. Therefore, an antibody is represented by H2L2. IgA, IgM, IgA, listen it. IgE, and IgG are some examples of antibodies in our body. Acquired immunity, or the acquired immune response, is primarily of two types: a humoral immune response and a cell-mediated immunity, or Innate is now clear. Now we can move to the word acquired immunity. Acquired immunity. Before to start, let me use board once again. Although it is very simple word.
acquired immunity. Acquired immunity in your NCERT also, two bold words are given. One is humoral immune response. Humoral immune response, and second is what? Cell mediated immunity, CMI. Okay, see the page number 151. I am reading that line what is given in your book, page number 151, last paragraph, two bold letters everybody can see. Different types of antibodies are produced in our body. IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. A cartoon of antibodies. Because these antibodies are found in blood, the response is also called as humoral immune response. Means what? This antibodies जो हम बार बार बात कर रहे हैं, lymphocytes are responsible for production of antibodies. Lymphocytes are part of blood. It means what? The antibodies will also be present in which part? This antibody is present in blood. कहाँ होगी एंटीबॉडी? ब्लड में होगी. ब्लड में होने का फायदा क्या है एंटीबॉडी का? कि ब्लड में होने का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि इट कैन इजीली रीच टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड के अलावा अगर ये एंटीबॉडी कहीं होता तो ये सिर्फ पर्टिकुलर उस जगह पे ही काम करता जहां पर ये है. समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी कहीं अगर क्वेश्चन हो कि व्हाई एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, व्हाट विल बी द आंसर? So that our whole body can get benefit from that antibody. It means what? That antibody can move to all part of the body by the help of blood. Either it is internal part or external part. Clear? Yes, sir. Now see, so humoral response means what? The antibody, humoral word includes, we can say that this word includes blood. When the antibodies are present in blood, it is called as humoral immune response. Okay? This now, and see further, this is one of the two types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called as cell mediated immunity. Cell mediated immunity, the name itself is indicating what? This immunity will be provided to our body by different cells. ठीक है? अभी तक हमने WBC में लिम्फोसाइट के बारे में तो जान लिया कि लिम्फोसाइट्स वर रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. बाकी के WBC क्या कर रहे हैं? that all WBC will come under which heading? Cell mediated immunity. Clear? See once again screen. CMI. It is the humoral immune response that is carried out by antibodies. Since antibodies are found in blood, it is called the humoral immune response. In this diagram, you can clearly see that how antibodies are getting attached with antigen. समझ में रहा है कैसे ये अटैच हो रहे हैं? यहाँ दिख रहा है. The word humoral refers to blood or any other body fluid. Humoral means we can say that blood or any body fluids, right? Yet anywhere. The cell-mediated immune response can be best understood with the example of an organ transplant. When organs like the eye, heart, kidney or liver fail, organ transplant is the only remedy. Thus begins the search for a suitable, healthy donor for transplantation. This is important because grafts or transplants cannot be made from just about any source, as the body will reject those grafts sooner or later. ठीक है? अभी जो बताया क्या बताया कि organ transplantation everybody is knowing. Organ transplantation का what is the major problem in organ transplantation? कि if the donor and recipient organs are not matched or blood is not matched, what happens after some time? That if the kidney of donor has been transferred to recipient, during initial phase it will work properly, but after some time the body starts to reject that organ. ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद बॉडी जो है उस डोनर का या जो फॉरेन का जो एजेंट हमने लिया था, किडनी लिया था, उसको रिजेक्ट करने लगती है. ये मेजर प्रॉब्लम होती है. To find a perfect match, tissue matching and blood group matching are conducted before a transplant.
This ability of the body to differentiate between cell. Okay. Cell mediated immunity. We will start from tomorrow. Now time is nearly over. If anybody is having doubt in this concept, you may ask. Yes, Vartika. ग्राफ क्या होता है वो ग्राफ से बता रहे थे